Assalamu alaikum and welcome back, and today the course is Operation Strategy. By now we know each other, and today I'm going to talk about another important aspect in Operation Strategy as we are moving towards the module of that what is the substitute of Operations Strategy. Over here let me just give you the recap of what we did in the last lecture. Actually in the last lecture, given lecture number 10, I moved a little bit, I took a deviation, and the reason for taking that deviation was that I thought that let's not just think that operations is just consisting of your manufacturing. We also need the service side also. So we need to be clear that once we are talking about these supply strategies, capacity building strategies or all that, they are also applicable in the service sector. So what we talked about that, okay, how services are different from the production models, and service and production are two different phenomena. What are the key elements when we are looking at the service quality models that we discussed. And then there's a very important role of the interaction between the service provider and your customer. But given the passage of time, things have changed. अब इसमें क्या आने लग पड़ा है, आपकी technology का बहुत ज़्यादा important role है. And as we're talking about technology, your technology has actually, at one point of time, they say it has improved the service delivery models on one part of the side. वो कहते हैं जी आपका जो human touch था वो ख़त्म होता जा रहा है service में. Because one of the important factors, remember कि जी service जब हम देते हैं तो it is always assumed कि जी it would be another person who will be giving or who will be talking to it. But अगर सारा कुछ machines कर रही होती हैं, then वो जो human element होता है वो आपका निकल जाता है. And that's why कुछ customer contact models में वो कहते हैं कि जी technology को just as a technology लें and just focus on your employees, focus on people, because they are the main ingredients. Technology is just enabling, technology is just helping them how to get these things done. On the other side जो है आपका some people say कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी सर्विस अनबायस्ड हो जाती है, उसमें बायसनेस नहीं आती, उसमें एरर्स क्या हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं. यू गो टू एन एटीएम ये नहीं देखती आइदर यू आर अ रिच और यू आर अ पुअर पर्सन, आपको उसी प्रोटोकॉल के साथ उसी प्रोसेस के साथ आपको पैसे मिलते हैं. सो देयरफॉर there are different views, but technology has really improved, technology has really enhanced and technology has really developed an expectation from the service provider, from the perspective of a customer, कि आप customers expect करते हैं कि service बहुत अच्छी होगी. उसी लिहाज से आपकी prices भी increase हो रही थी, but now the expectations have increased because of your technology. उसके बाद हमने कुछ service quality strategies पढ़ी थी, that what kind of strategies are applied, how these strategies can be utilized in terms of ensuring quality in service model. And last जो है, that is not lecture number 9, rather lecture number 9 के अंदर if you remember हमने बात की थी कि ओके ऑपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह बनती है, जो कि हम पिछले 4-5 लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं. बट देन लेक्चर नंबर 9 वी टेक अ लिटिल बिट डिफरेंट टर्न, और लेक्चर नंबर 9 में हमने बात की थी दैट ओके हाउ और व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स फॉर ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी. अब जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स फॉर ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस. अब उसमें आपकी जो पहली डायमेंशन थी दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आर कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं इट स्वीप्ड द मार्केट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्वालिटी और किस तरीके से हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं. डिफरेंट वो जुरान था, क्रॉसबी था, इन्होंने अपने वो डेमिंग था, इन्होंने 14 क्वालिटी सर्कल्स दिए. ऑल दैट स्टफ was actually telling you कि जी आपने अपने operations के अंदर क्या लेके आना है, excellence लेके आनी है. Now the problem is कि the way we have focused on quality, लेकिन operations का एक जो pillar था that is already quality. So चाहे आप quality के बारे में such उसको specifically लेके आए या आप उसको ना लेके आए, quality is always there. ठीक है. So the hype that got created like 25-30 years ago about quality, quality
now we don't find that element as it is. ठीक है, so quality has been there क्योंकि वो कहते हैं जी product के अंदर it is an essential ingredient. You don't make an effort कि जी quality होनी चाहिए because quality is mandatory. If you really want to sell your product, if you really want to have your services provided to a large number of customers, तो आपकी quality तो उसके अंदर होगी. आप उसमें कोई एक्स्ट्रा फार्मूला या उसके एक्सीलेंस तो नहीं लेके आ रहे, क्वालिटी आपने रखी हुई है. सो वो जो था एक वेव ऑफ ऑपरेशंस एक्सीलेंस थी जिसमें हम क्वालिटी को समझते थे दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग एक्सीलेंस इन ऑपरेशंस. वो as such नहीं है today if we are talking about in 21st century because they say कि quality वैसे की ऐसे ही है. So we talked in detail about this issue of quality कहाँ से start हुई and what is the role of your ISO 9000, ISO 14000 and all that. And later on now we talk about your ISO 14000, 9000 in standards के बाद फिर SA 8000 आ गया, उसके बाद फिर Deming, क्रॉस्पी, जुरान, इन्होंने डिफरेंट अपने बताए कि जी क्वालिटी को आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं. सो आफ्टर ऑल दैट कंप्लीटेड वन पोर्शन ऑफ एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीन मैनेजमेंट, लीन ऑपरेशंस. ठीक है, अब लीन क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इमर्जिंग कमिंग फ्रॉम जापान और ये भी कोई 25-30 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को आए हुए. एंड the issue is that we are not, it hasn't lost its charm. जिस तरीके से quality को अब हम वैसा नहीं करते क्योंकि it has lost its वो जिसे कहते हैं charm, quality को अगर हम करें. But lean is still being applied. lean को as a strategy लिया जाता है. lean को ये देखा जाता है that by when we are applying lean in an organization, it is actually helping in the production, it is helping in the excellence, it is helping in the operations management, it is helping in terms of cost reduction. So lean is really important. Now moving on, what is the question for today's lecture is that how do lean operations fit into operations strategy? Same old story, but we are going to present it in a different manner. कि जी अब हम पहले क्वालिटी को देख रहे थे, अब हम लीन को देखते हैं. नाउ इफ यू सी इन दिस स्लाइड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी एक साइड पे आपका रिसोर्सेज हैं, एक साइड पे आपके मार्केट पर्सपेक्टिव्स हैं. Over here we have our performance objectives in the middle. अब in the middle you have seen कि जो हमारे decision areas हैं जिनके ऊपर हम अब कहते हैं जी हमने performance objectives को measure करना है, that is basically your TQM, your Six Sigma, your Lean and your business process re-engineering. We have covered TQM. Today I'm going to talk about your Lean management. In the next lecture the BPR, and then I'm going to talk about your Six Sigma because they are highly important. Over here JIT, another name for lean operations, इसको कहते हैं JIT भी कहा जाता है, and that is basically your just in time. Toyota ने ये concept लेके आया, Japanese, and what we are talking about that good production systems, या आप इसको कह लें good operations require that managers address 3 major issues. और वो कौन से हैं? Elimination of the waste, number 2 reduce or remove variability, and number 3 it is improve throughputs. ठीक है, so किसी भी अगर organization के operations में if you want to see and you need to see it from the lens of lean management, the first part is your elimination of waste, number 2 is your removal of variability, and number 3 is your improvement in your throughput ratios. ठीक है, ये याद रखिएगा. Now अब हम lean operations को define कैसे करते हैं. ठीक है, अब lean operations क्या करता है? It is basically operations आपका real time चल रहा है. You are actually meeting the demand instantaneously with perfect quality and no waste. Over here we are doing 3 things. जैसे ही कस्टमर ने कोई चीज़ डिमांड की, हमने उसकी डिमांड को पूरा कर दिया इंस्टेंटेनियसली. जो वेस्ट है वो हमने नहीं किया, देयर इज नो वेस्टेज. एंड द थर्ड वन इज कि वी हैव इंश्योर्ड कि जो प्रोडक्ट हमने अपने कस्टमर को दिया दैट इज इन गुड क्वालिटी.
In other words, how we can actually define our lean operations is कि अगर आप ये second वाले bullet को देखें, it's basically कि flow of products and services, ठीक है, always deliver exactly what customer want. यानी जो customer ने जैसा मांगा मैंने बिल्कुल वैसा उसको दिया. So I'm talking about quality, the dimension of quality, a perfect quality. In exact quantities, whatever person has demanded मैंने उसको exactly उसी quantity में दिया है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. Then exactly when needed, यानी जिस टाइम पे आपने उसको डिमांड की है उसी टाइम पे आपको वो चीज़ मिल गई है. Exactly where required, यानी जिस लोकेशन पे आपने मांगी है आपने को मैंने उसी लोकेशन पे वो प्रोडक्ट आपको ला के दिया है. And the last one, at the lowest possible cost. This is basically your lean operation. Number one is your quality, number two is your exact quantity, number three is your exact where it is needed, number four is your exactly where required, and number five is your exactly low possible cost. Now what happens that अगर ये सारी चीज़ें हैं तो it results in items flowing rapidly and smoothly through processes, operations and supply networks. ठीक है. अब when we talk about lean operations, the lean के 4 elements हैं. There are 4 elements of lean management. Number 1, your waste elimination. Number 2, your behavior. Number 3, your synchronization. And number 4 is your customer focus. कि जी आपने waste को कम करना है, आपका behavior उस particular operations में how is that, then it has to be synchronized, and then आपका क्या होना चाहिए, customer focus होना चाहिए. Now over here, when we talk about eliminate waste, what exactly we are looking into? Waste is anything that does not add value from customer's point of view. In any organization, even in your house, everywhere there is waste. You can't say कि जी wastage नहीं होता. Wastage बिल्कुल होता है. Now lean क्या कहता है? Eliminate waste. कि जी कोई चीज़ आपकी waste ना हो, right? Storage, inspection, delay, waiting in queues and defective products do not add value and they are 100% wastage. अब manufacturing अगर आप देख लो conveying belt के ऊपर कि जब आपके पास inventory के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं and they are not being sold, so that is basically a wastage, right? Because you are paying extra cost on the storage, the maintenance is required, the security is required. So ये जो costs हैं कहीं पे add up नहीं हो रही and they are actually becoming a problematic issue. So that is basically storage is also waste. Inspections, they are wastage. Delays जो आपके आते हैं, उसके बाद ये जो अब आपकी क्यू ऑपरेशंस में या मैन्युफैक्चरिंग अंदर आपकी जो क्यूज बन जाती हैं मैन्युफैक्चर के, जी आपने अभी तक डाइंग नहीं की तो स्टिचिंग नहीं हो सकती, अगर आपने वीविंग नहीं की तो ये नहीं हो सकता, तो वो क्या कर रहा है, आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, एंड इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ये क्या करते हैं, व्हाई वी आर सेइंग इट एज दैट, बिकॉज दे डू नॉट एड वैल्यू टू द प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वी जस्ट डिलीट इट और वी जस्ट इवन कंसिडर देम कि दे आर 100% वेस्टेज. नंबर 2, ओनर्स, इसने 7 वेस्ट्स आइडेंटिफाई किए थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर 7 काइंड्स ऑफ वेस्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. नंबर 1, प्रोडक्शन एक हो रही है और प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है कि जी आपने सिर्फ 1000 यूनिट्स बनाने हैं और आप बना देते हैं 2000. नाउ दैट एक्स्ट्रा 1000 इज योर वेस्ट बिकॉज उसकी कोई ऐसा मार्केट नहीं और आपने उस पर एडेड कॉस्ट आपकी वो एक्चुअली इंक्रीज कर देगा. नंबर 2, अब क्या आ जाता है आफ्टर वो प्रोडक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी आपका योर all the material that is on the conveyor belt, अगर उस पे queues आने लग पड़े, यानी one process has delayed rest of the processes, this is also a wastage. Then your transportation, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितनी वेस्टेज होती है. फिर आपकी इन्वेंट्री, अगर आपकी इन्वेंट्रीज भरी हुई हैं, देन इन द मोशन व्हेन द your products or when these commodities are moving from one place to another, आपकी जो motion studies होती हैं. Then over processing, आप it's not required कि आपने over उसको process कर दिया है, and then there is always defective product. So
आइडेंटिफाइड कि भी ये आपके 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं विच आर एक्चुअली 100% not adding value to your customer. Then we talk about eliminate the waste. Other resources such as energy, water and air are also wasted. ये आपके natural resources वगैरह होते हैं. उसके बाद how we can actually stop wastage if you are actually using efficient, sustainable production minimizes inputs and reduces waste. अब traditional housekeeping has been expanded to 5 S's. अब जो 5 S's आपके कौन से हैं? Number 1, आप अगर वेस्ट को कम करना चाहते हैं, ये हम 5 S's को देखते हैं. नंबर, और ये है हाउसकीपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है. सॉर्ट, when in doubt throw it out. ठीक है, जब आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, डोंट कीप द मटीरियल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इफ़ यू थिंक कि भी इसकी यूज़ नहीं है, उसी वक्त उसको फेंक दें. अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग टू if you're not going to throw it, it will keep on accumulating and ultimately it is going to take all the space और आपके फिर decisions लेना मुश्किल होता है कि भी now things are piling up. It has happened, if you look around your room, there are so many things which are not even required. There are so many clothes which you haven't wore for for the last 1 year. हर winters के अंदर हम उनको निकाल लेते हैं that okay we will wear it but it never gets a chance. So why you are keeping it? ठीक है, memories होती हैं but sort them out. So sort क्या करता है? When in doubt, throw it out. That's the simple mantra. Then comes your simplify. Simplify कर लो या straighten कर लो. Methods analysis tool, कि जो भी आपके जो चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, अपने सर्विस मॉडल्स को देख रहे हैं, उनको क्या रखें? सिंपल रखें. डोंट मेक इट टेक्निकल. देन शाइन और स्वीप. ऑलवेज क्लीन डेली. डोंट वेट कि जी 1 हफ्ते बाद होगा या हम मेड आ जाएगी 3 दिनों के बाद, देन इट विल, बिकॉज अगर आप डेली क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है? इट इज़ एक्चुअली adding up to the waste. Then comes your standardize. Remove variations from processes. Most of the time वो यही कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जब होती है then the processes are unbiased. टेक्नोलॉजी processes के अंदर variations नहीं आती, लेकिन अगर कोई ह्यूमन कर रहा है तो उसमें variations आ सकती हैं और आती भी हैं. For example, if I know someone, if I know my customer, I'll give him more जैसे कहते हैं protocol दूंगा, उसके साथ मैं I'll give him privilege. लेकिन if I don't know that person, I may be giving a very normal kind of service. So therefore what they say कि जी clean daily. Then comes your standardize, कि जितनी भी variations हैं उनमें क्या करते हैं आप? standardization ले आए. And last one is कि आप इसको क्या करो? sustain करो. जो भी आपने efforts किए हैं, don't just keep it कि जी बस आज के दिन या सिर्फ इस process के लिए हम कर रहे हैं. But what you have to do is that you have to sustain it. The objective is not that you have become efficient at one point of time. The objective is to maintain that efficiency, and that is basically your sustaining or self-discipline. So review work and recognize your progress. Because you are actually making progress. अब इनके अलावा भी 2 S हैं. Now what are those S's? Number 6S is your safety. ठीक है, safety में क्या होता है कि always come up with the good practices that helps you and your organization. उसके बाद support and maintenance, reduce the variability and unplanned downtime. जितना आप इसको इस downtime टाइम को कम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी operations क्या होगी? effective होगी. Now number 2, हमने first पढ़ी quality. Number 2 we are talking about is variability. Remove variability. Now what we are looking into variability is that JIT systems require managers to reduce variability caused by both internal and external factors. As we have discussed in the previous slide, के 3 किस्म के होते हैं. First is reduction of waste, number 2 is your variability. अब variability के अंदर what we are saying is कि आपके internal भी है और आपकी external भी है. Internal external को देखने के लिए हम कहते हैं कि JIT systems, just in time systems, require managers to reduce variability. अब variability क्या होता है कि एक आपका प्रोसेस चल रहा है एंड दैट इज एन ऑप्टिमम प्रोसेस, और उस ऑप्टिमम प्रोसेस में अगर आपकी डिविएशन आ रही है, दैट इज बेसिकली योर वेरिएबिलिटी.
Now we don't want that variability. ठीक है, आपने इसी variability को eliminate करने के लिए आपने control systems बनाए होते हैं, आपने standardize किया होता है processes को, आपने देखा होता है कि ये मेरी thresholds है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता. Then आपकी जो इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्रीज क्या करती हैं, दे हाइड वेरिएबिलिटी. इन्वेंट्रीज इस वजह से नहीं होनी चाहिए. डेल बेस्ट सिस्टम, क्योंकि वो इन्वेंट्री अपनी हानि नहीं देता, विद इन 3 days वो अपना ख़त्म कर देता है. देन लेस वेरिएबिलिटी रिजल्ट्स इन लेस वेस्ट. जितनी ज़्यादा आपकी वेरिएशन कम होगी, वेरिएबिलिटी कम होगी, उतना कम आपका वेस्ट होगा. नाउ what are the sources of this variability? कहाँ से ये variations आ रही हैं? Number 1 कि जी आपकी जो specifications हैं, जो आपकी drawings हैं, वो क्या हैं? Inaccurate हैं, they are incorrect. ठीक है, they are incomplete, they are inaccurate, और that's why you are unable to see कि जी कहाँ पे मेरी deviation आ रही है. Then poor production processes resulting in incorrect quantities, late and non-conforming units. वही अभी हम जो बात पहले कर रहे थे कि जी आपने when you are ensuring that we have a lean management, so we ensure that आपकी जो quantities हैं वो क्या हो, exact quantities हो, आपने जो conformance हो वो standards के साथ conform करता हो. But if that is not there, then what we are doing is we are having variability. And the last one is कि you have to be sure about your customer needs, क्योंकि जब आपकी unknown customer needs are the customer is asking something else and you are not prepared for that, then that is basically that you are running out of which is कहते हैं variations ज़्यादा आ जाएगी आपके optimum path से. Now both JIT आपका जो just in time है and inventory reduction are effective tools in identify causes of the variability. अब इसके अंदर जब हम देखते हैं कि जी आपकी variation क्यों आ रही है, why you are not on the optimum path, why you have deviated, so these two tools actually help us to giving you the answer that why such thing is happening. Now the third part, obviously not the last part. Third part is basically your improve the throughput. अब improve throughput के अंदर क्या है, take the time it takes to move an order from receipt to delivery. ठीक है, ये that is basically throughput time. अब हमने क्या करना है कि throughput time जितना ज़्यादा कम होगा we are in a better shape. लेकिन throughput time अगर ज़्यादा है तो then it's not a good thing. So we need to see that how these throughput times are working. So अगर हम इसकी definition करें तो then I'll again repeat it that the time it takes to move an order from receipt to delivery, that is very, अब ये वाला time आपने क्या करना होता है, calculate करना होता है. उसके बाद आप pull system increases throughput. जितना ज़्यादा आपका pull system होता है वो आपके throughput ratio क्या कर देता है, increase कर देता है. Then by pulling material in small lots, अब आपने material को क्या किया, small lots का कर दिया तो inventory cushions are removed. जब आप उनको छोटी छोटी lots के अंदर divide कर देते हैं तो आपका जो inventory का जो cushion होता है वो कम हो जाता है, बल्कि remove हो जाता है. Now what it does is that आपका जो manufacturing cycle time होता है वो भी आपका कम हो जाता है. उसके बाद आपकी जो push system dump orders on the downstream stations regardless of the need. हम क्या कह रहे हैं, हम pull की बात कर रहे हैं, push की नहीं बात करते. जब push होता है then what happens that it actually just materials भेजी जा रहे होते हैं और आपके bottlenecks create हो जाते हैं, queuing आपकी ज़्यादा हो जाती है, and that actually doesn't result in JIT or doesn't result in lean, it rather creates problem. Now what's just in time? अब just in time के बारे में बहुत ज़्यादा भी हम synonymous use कर रहे थे, but mostly JIT is a little bit different. Now JIT क्या है? It is a powerful strategy for improving operations, very powerful tool, and materials arrive where they are needed when they are needed, just in time. The more when they are needed and where they are needed. यानी मुझे I need some XYZ material today at 6, तो ये नहीं होगा कि मैंने सुबह के 10 बजे कहीं अब 3 दिन पहले का मंगवा लिया हुआ है. No, आपके systems या आपके logistics इतने fast होते हैं within organization के we are not supposed to even have inventory of them. So you see that we keep inventory of two kinds of goods. Number one is your finished goods,
ठीक है, दैट इज नेसेसरी. एंड नंबर 2 इज योर रॉ मटेरियल. तो अगर रॉ मटेरियल भी पड़ा रहेगा आपकी इन्वेंट्री में एंड इन्वेंट्री इज राइजिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, आपकी मार्केट में डिमांड नहीं हो रही. सो यूजुअली जस्ट इन टाइम होता है कि जी आप चीज़ ही वो लेके आए विच यू आर ब्रिंगिंग इन, राइट. नाउ लास्ट over here that we are actually working on the pulling part. ठीक है, we are not talking about the pushing part. ठीक है, when they are needed and why they are needed and where they are needed. So these are the questions that we are talking about. Now इसमें क्या आ जाता है that आपकी जो real time monitoring है that is highly important. What we are doing is that you have to identify problems and driving out waste reduces costs and variability in and improves the throughput. जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम पता चलती है, डू नॉट वेट एंड डोंट लेट इट मूव टू द सेकंड स्टेज. आपको जैसे जैसे पता चलता है, कीप इट टू दैट पार्ट एंड मूव, उस प्रॉब्लम को वहीं पे रिमूव करें. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव इट, वो आगे जाके सारे प्रोसेस को क्या कर देगी, ख़राब कर देगी. इट रिक्वायर्स अ मीनिंगफुल बायर एंड सप्लायर रिलेशनशिप. अगर जिस तरह हम कहते हैं कि आई नीड दिस थिंग राइट नाउ, it means my supplier needs to be highly efficient. और इसके बारे में जापानीज की क्या philosophy है, that they say कि when we are talking about the buyer, when we are talking about the suppliers, don't make a transactory relationship with your suppliers, make it as a partnership. जब suppliers के साथ आपकी partnership होती है, they feel the pain, they feel as they are the part of the business. But if you are not keeping it as वो जिसे कहते हैं ना, if you're not keeping them as your partners, तो फिर suppliers उस तरीके से आपके साथ relate नहीं करते. तो you need to have a sustainable relationship with your suppliers. अगर आप JIT को definitely अपनी organization के अंदर apply करना चाहते हैं, because आपकी supply अगर कहीं पे उस पर बॉटल नेक आ गया या सप्लायर ने कहा जी सॉरी मैं नहीं कर दे सकता, लेकिन आपका सारे प्रोसेस उससे रुक जाएंगे. सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर सप्लायर. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट के हमारे JIT के अंदर वंस वी फोकस ऑन द क्वालिटी, देन वी फोकस ऑन कि हमारे प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं. देन ऐसे कि जी आपने जो प्रोसेस के अंदर करना है, आपका जो बायर और आपका जो सेलर का रिलेशनशिप है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. नाउ कंपेटिटिव एडवांटेज अगर आपने लेना है तो JIT की कुछ टेक्निक्स हैं, हाउ वी कैन हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज व्हेन वी आर यूजिंग JIT. नंबर 1, सप्लायर्स में ऑलवेज गो फॉर फ्यू वेंडर्स. जितने ज़्यादा आपके सप्लायर्स होंगे तो मे बी देयर विल बी अ क्वालिटी इशू. तो आपके जितने कम सप्लायर्स होंगे, रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप सस्टेनेबल है, दैट विल हेल्प यू. अब आपका जो सप्लायर का रिलेशनशिप है, दैट हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव. सप्लायर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जी व्हाट आर द नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आपकी जो डिलीवरी टाइम है वो आपके एक तो टाइम पे होने चाहिए, देन इट हैज़ टू बी क्वालिटी फोकस्ड एंड देन इट शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली टू द वर्क एरियाज. उसके बाद वी टॉक अबाउट योर लेआउट. आफ्टर कमिंग टू सप्लायर्स, द सेकंड एरिया इज योर लेआउट. लेआउट के अंदर क्या होता है कि आपका जो वर्क प्लेस की जो सेटिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आप क्या करें, वर्क सेल्स आपने बनाए हो, आप टेक्नोलॉजी ये ना यूज करेंगे जी एक आदमी के पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी, दूसरे आदमी को डिफरेंट टेक्नोलॉजी. इट हैज टू बी ग्रुप टेक्नोलॉजी. देन द मशीनरी नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल. उसके बाद आपकी हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस हो. अगर आप अच्छी मल्टीनेशनल में जाएं तो ओवर देयर यू वुड सी इट्स अ वेरी सिंक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस. इफ यू एवर विजिटेड यूएस, वहाँ पे अगर आप जनरल मोटर्स का या जीई का या टोयोटा के प्लांट्स को अगर आप देखें, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, इट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद ऑलवेज रिड्यूस प्लेस फॉर इन्वेंट्री, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री की प्लेस होती है, पीपल थिंक वी कैन स्टोर देम एज मच एंड एवरी स्टोरेज हैज इट्स कॉस्ट. सो देयरफॉर वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. देन द थर्ड एरिया इज योर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में अब हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री को आप क्या करें, स्मॉल लॉट साइजेस के अंदर करते हैं. इफ यू हैव एवर बीन टू ये जो पीटीसी जेलम में हम जाएं तो यू विल फाइंड दैट वेरी मच कि जो इन्वेंट्री की में जो स्मॉल लॉट साइजेस आपने रखे होते हैं.
सेटअप टाइम बहुत कम होना चाहिए, अप्लाई लो सेटअप टाइम एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट बिन्स होने चाहिए. इन टर्म्स ऑफ अगर हम फोर्थ एरिया अगर हम करें, दैट इज योर स्केजुलिंग. ठीक है, स्केजुलिंग के अंदर क्या करें कि जी आपकी जो डिविएशन है, जिस टाइम पे आपने जो स्केड्यूल किया है वो एक्टिविटी वैसी ही होनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिविएशंस फ्रॉम दैट. एंड आपके जो लेवल शेड्यूल्स होने चाहिए. उसके बाद जो आपके सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर शेड्यूल्स, बिकॉज इफ सप्लायर्स आर अनअवेयर, so that is not going to work out and there will be delays. If you have seen, अगर आपने शेड्यूलिंग का देखना है तो आप ज़ारा की देखें, the Apparel कंपनी जो कि ये क्लोथ्स वगैरह बनाती है, इनके जो है सप्लायर्स दे नो अबाउट देयर स्केड्यूल टाइम्स. ठीक है, उसके बाद यू कैन यूज द कैनबन टेक्निक्स. कैनबन अगेन इट्स अ कार्ड की एक टेक्निक होती है, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड्स. उसके बाद आपने जो मेंटेनेंस के हवाले से के एरिया में जब आप जिट अप्लाई करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज कि मेंटेनेंस आपकी क्या होनी चाहिए, शेड्यूल्ड होनी चाहिए. देयर शुड बी अ रूटीन इन इट. उसके बाद आपके जो ऑपरेटर है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा उसमें होनी चाहिए. Then coming on to the production. Production is basically कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी की होनी चाहिए. अब उसके लिए you can use SPS tools, statistical process techniques आप यूज़ करते हैं, statistical process controls आप यूज़ करते हैं. उसके बाद आपके पास क्वालिटी सप्लायर्स होने चाहिए और आपकी जो फर्म के विदिन, आप सप्लायर्स को तो आपने क्वालिटी किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी फर्म के अंदर क्वालिटी नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग. सो यू नीड टू हैव क्वालिटी इन द फर्म ऑल्सो. उसके बाद as I said, let's start moving from technology. अभी आप पीछे देखेंगे, they are all mechanical tools. ठीक है, now move towards people. So what we are talking about कि आप अपने employees को empower करें, delegate authority to them, empowered and cross-trained employees. If you have seen के organizations के अंदर अब जो first जो हायरिंग होता है प्रोग्राम, दैट इज द MTO, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर. अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स में को ये किया जाता है, दे आर डिप्यूटेड फ्रॉम लाइक 3 माह वो हर डिपार्टमेंट में लगाते हैं, सो दैट दे नो एंड दे अंडरस्टैंड कि हर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड इफ देयर इज एनी नीड इन एनी अदर डिपार्टमेंट, सो दे आर ट्रेन्ड दैट दे कैन एक्चुअली रिप्लेस द वर्कर्स. सो दे नीड टू बी क्रॉस ट्रेन्ड वर्कर्स. ठीक है, देन आपकी जो ट्रेनिंग सपोर्ट होनी चाहिए, और HR डिपार्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद फ्यू जॉब क्लासिफिकेशंस टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए ऑफ द एम्प्लॉइज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कमिटमेंट. आप कमिटमेंट में क्या होना चाहिए कि जी देयर नीड्स टू बी सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, देयर नीड्स टू बी सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड देयर नीड टू बी सपोर्ट फ्रॉम द सप्लायर्स. वंस यू क्रिएट दैट, इस किस्म की अगर आप जब एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होती है इन सारे प्रोसेसेस में, तो यू वुड सी इट विल गिव यू अ रिमार्केबल इम्प्रूव्ड results in terms of your JIT, or this creates a competitive advantage as compared to other firms. Now, after doing all these interventions, what it is resulting in, what we are looking into कि आपके rapid throughput freeze एसेट्स हो जाते हैं, आपके एसेट्स जल्दी यूज होते हैं. देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिड्यूसेस द वेस्ट, आपका वेस्ट की एलिमिनेशन एकदम हो जाएगी, वेस्ट रिडक्शन आपको आएगी. उसके बाद देन जैसे जैसे आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, यू हैव मोर एरिया फॉर प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वन वे ऑफ इंप्रूविंग योर टोटल रेवेन्यूज इज आइदर प्लेइंग विद द प्राइस वेरिएबल और प्लेइंग विद द कॉस्ट वेरिएबल. राइट नाउ वी आर फोकसिंग व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑल दीज टेक्निक्स इन द ऑपरेशंस एंड वी आर लुकिंग एट द कॉस्ट. तो आपकी कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज्यादा होगी. एंड देन यू हैव योर वेरिएबिलिटी रिडक्शन, आपकी deviations कम होंगी from the optimal processes, and last but not the least there will be a rework reduction, which wins orders by faster response to the customer at low cost and higher quality. And if you see, lean यही कहता है when we looked at the definition of lean, and that gives you a competitive advantage. Now JIT में partnerships का क्या रोल है? JIT partnerships exist when supplier and the purchaser work together to remove the waste and drive down the costs. So the word comes partnership. Do not have a transactional role के supplier के जी मैंने माल आपको दे दिया है, that is it. Supplier needs to be involved in your processes. Supplier needs to be
feel that he is part of the organization. और JIT की partnerships के 4 goals होते हैं. And what are the 4 goals? Number 1, removal of unnecessary activities. आप जितने भी अपने processes को simplify करेंगे, linear करेंगे, that will help you in the removal of the unnecessary steps. Because unnecessary steps क्या करते हैं? They will add to your cost and they will add to the time. Then comes removal of the in-plant inventory. कोशिश करें कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपका supplier आपको उस टाइम पर ला दे, rather than you are having an inventory in your own organization. उसके बाद removal of in-transit inventory. And the last one is improved quality and reliability. So these are the 4 goals of JIT partnerships, which not only you or your organization needs to understand, लेकिन यही आपके 4 goals और objectives आपके suppliers की भी understanding होनी चाहिए. Now coming on to कि जी अब आपकी किस तरीके से ये JIT partnership workout करती है. एक साइड पे अगर आप देखें in the blue box you would see the suppliers, on the other side you will see the buyers. अब suppliers क्या कर रहे हैं कि always from the side of suppliers what we are looking at, we need to go for a buyer who is nearby, क्योंकि जितना आपका buyer दूर होगा उतनी ज़्यादा supplier को transport cost पड़ेगी, उतनी ज़्यादा आपका time होगा, उतने में भी आपकी bottlenecks आपकी create हो. Then extend JIT to their suppliers, यानी जो supplier है वो भी तो कहीं से ले रहे हैं ना, they are taking the material, raw material from somewhere else. तो वहाँ it's not that they should just have a JIT partnership between the buyer and the immediate supplier, लेकिन supplier ने अगर backward जाता है तो अपने suppliers के साथ भी वो JIT की techniques को apply करे. And you need to include your packaging, you need to include your routing details whenever you are transporting it to the buyers. उसके बाद आपकी detailed ID होनी चाहिए और आपकी labeling बड़ी clear होनी चाहिए. And you need to focus on the core competencies where you are good at. Now this is the profile of the suppliers. Now coming on to this profile of the buyers. अब buyers में क्या होता है that you need to understand कि मेरा customer क्या चाह रहा है. As I said that what the customer wants we need to deliver that. What the customer is expecting we need to give that to him. So share customer preferences and demands forecasts. ठीक है. उसके बाद minimize product specifications and encourage innovation. जितना ज़्यादा आपके product के अंदर innovation आएगी that is giving you a sustainable competitive advantage. उसके बाद जो आपकी supplier innovation और competitiveness है उसको आप encourage करें. उसके बाद don't go for the short term, 1 साल 6 महीने के contracts ना करें. If you have a good reliable supplier, go for the long term contract so that supplier के अपने stakes भी आपकी organization के अंदर हों. उसके बाद again you need to focus on your core competencies. And last one, that process orders with minimal paperwork. ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी paper trails होंगी उतनी ज़्यादा कि यहाँ पे sign करें, ये करें, कोशिश करें that your process should be paperless. Your process should involve less paperwork. और ये किस पे आप अगर ये आपकी प्रोफाइल एज अ बायर है और वो प्रोफाइल जो मैंने पिछली बताई दैट वाज एज ए और सप्लायर, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? इट शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. Now when suppliers are doing, they are actually doing the shipping. जब वो shipping करते हैं तो shipping में that is basically your transport, seek joint scheduling and shipping efficiencies, both buyer and supplier. Then you need to go for the 3PLs, because if the supplier is doing it then it adds up the cost, it reduces the efficiency. तो अब क्या करते हैं आप outsource करते हैं, you can go for the third party logistics. Use advanced shipping notice ASN. आप पहले ही ships को पता हो कि ये आपका scheduled activities हैं, ये आपका scheduled material है which has to be given to the customers or the buyers. And last one is ship frequent small orders, क्योंकि third party logistics से भी stakes होने चाहिए. And as you are giving them more and more business, they are more reliable to you. Now coming on to the quantities. अब quantities के अंदर क्या होता है? Always produce small lots, ठीक है, deliver with little overage and underage, and meet mutually developed quality requirements. आपके quality standards आपके define होने चाहिए, and produce with zero defects. कि जी आपकी जो production होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? Zero defect होनी चाहिए. अब JIT का अगर आप layout देखें तो what you're doing is that reduce waste due to movement. How to do it? Number 1,
कौन सी ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं कि आप अपना मूवमेंट से अपना वेस्ट को कम कर सकते हैं. नाउ बिल्ड वर्क सेल्स फॉर फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है तो उनकी एक शैम्पू की फैमिली है, दे आर प्रोड्यूसिंग नॉट जस्ट पर्ट प्लस, उससे ज़्यादा भी वो शैम्पूज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हमें क्या बनाने चाहिए, वर्क सेल्स बनाने चाहिए जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं. देन इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन स्मॉल एरिया, ठीक है, ताकि आपकी वो जो मूवमेंट है वो कम हो. उसके बाद मिनिमाइज द डिस्टेंस आपका कम होना चाहिए. उसके बाद डिज़ाइन लिटिल स्पेस फॉर इन्वेंट्री एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इट. देन इम्प्रूव द एम्प्लॉय कम्युनिकेशन. जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी, दैट ब्रिंग्स मोर बेटरमेंट, बिकॉज आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है. यूज़ पोकोयोक devices. Pokeyoke devices क्या होती हैं? These are self-corrective devices. I'll give you a very small example. ये जो था आपका when you are going to the fuel at the gas station या जो पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो you open your car. आप अपने वो फ्यूल टैंक खोलने के लिए you will press the button या आप चाबी से अपना वो खोलते हैं and he opens the lid of that fuel tank. And once he fills the fuel, he वो ढक्कन को बंद करता है. एंड व्हेन ही क्लोजेस द लिड, अब अगर वो लिड प्रॉपर्ली बंद नहीं होता तो सारा फ्यूल वैसे ही एयर के अंदर उड़ जाएगा एंड देयर विल बी स्मेल इन योर कार एंड ऑल दैट. अब इसके अंदर पोकेयोक टेक्निक क्या लग जाती है कि वो इट विल एज ही इज टाइटनिंग द कैप ऑफ दिस फ्यूल टैंक, तो ऑटोमेटिकली एक लिमिट आती है जहाँ से आवाज़ फिर एक डिफरेंट किस्म की आने लग पड़ती है दैट ओके यू हैव टाइटेंड the fuel cap. Now that is a pokeyoke. ठीक है, सेल्फ उसने ऑटोमेटिकली सेल्फ सेफ्टी टेक्निक्स आ जाती हैं उसके अंदर. एंड यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी केयरफुल, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट सिग्नल. द मोमेंट आपकी वो चीज़ आ गई एंड द थिंग्स वर्क आउट. सिमिलरली बिल्ड फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल इक्विपमेंट. अगर इक्विपमेंट ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, आपकी इनोवेशंस हो रही थी, मशीनरी चेंज होती है, और ये ना हो कि आपने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि भैया वो मशीनरी उठ नहीं सकती. यू नीड टू हैव डिज़ाइन इट इन सच अ वे कि अगर आपको वो चीज़ रिप्लेस करनी पड़े या वो चीज़ आपको मूव करनी पड़े फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट कैन बी डन ईजिली. एंड ऑब्वियसली यू नीड टू क्रॉस ट्रेन योर वर्कर्स एंड एड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर TORs. So what it does is that it reduces the waste due to movement. Now, distance reduction कैसे की जाती है in JIT? Large lots and long production lines with single purpose machinery are being replaced by smaller flexible cells. इस तरह क्या हो रहा है, आपका distance कम हो जाता है. Often use shape for shorter paths for improved communication. आप जितनी भी production lines देखेंगे usually in the manufacturing, that is always, it's not linear, straight नहीं होती, वो इस तरह turn करके U shape हो जाती है. And always use group technology. वही अभी हमने पीछे discuss की. उसके बाद जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो सेल्स आर डिजाइंड एंड टू बी रीअरेंज्ड एज वॉल्यूम ऑफ डिजाइन्स चेंज. ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट एज वेल इन प्रोडक्शन, दोनों में. और जब हम ऑफिस एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जी आपने सर्विस डिलीवरी को ही आप दे रहे हैं. एंड फैसिलिटेट बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट. सो इससे क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए. देन इससे आपके एम्प्लॉयज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जितनी ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ क्रॉस ट्रेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे आई नो इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड आई नो मार्केटिंग ऑल्सो, तो मैं दोनों डिपार्टमेंट्स में कंफर्टेबल हूँ. इफ़ आई एम इन द इंजीनियरिंग तो मैं मार्केटिंग के एस्पेक्ट से भी सोचूंगा, इफ़ आई एम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो मैं इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स भी ले रहा होता हूँ. आई विल गिव यू अ वेरी ऑर्गेनिक एग्जांपल. यहाँ पर नया टेल ऑर्गेनाइजेशन है इन पाकिस्तान, एंड इफ़ यू लुक आउट देयर criteria, he says, I met the CEO and he said कि जी I don't ask for a highly qualified people, I just say कि जी जिस बंदे के अंदर passion है, जो बंदा loyal है, जो बंदा trustworthy है, I hire those people as the entry point in my organization. And why is that? क्योंकि मेरा अपना in-house training house है, और in-house training में they just groom them, technical and as well as managerial training उनको देते हैं. और one of the parts is कि recruitment के अंदर they have the psychological tests also, और psychological tests जब होते हैं तो वहीं से उनको idea हो जाता है okay this person is कि क्या philosophy है, क्या इसकी psychology and how long he is going to stay in the organization. So whether Mr. A should be given the chance of
to be the chief operating officer, he has the potential or not. तो उनको entry point पे पता चल जाता है that which people are going to rise in the organization. So improved communications facilitate the passing on of the information about the process. Always let your employees know कि जी आपका process कैसा है and how it is going on. With little or no inventory buffer, get it right the first time is critical. I was at Akoda Khatak, Pakistan Tobacco Company की जो है और जो second की manufacturing hub है, वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, always do it right in the first time. क्योंकि अगर आप पहली दफ़े चीज़ गलत करेंगे तो आपके waste क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता है. Take time, लेकिन अगर आप and try to do it right on the first time. Then reduce space and inventory. अब reduce space and inventory के अंदर what we are looking into, that with reduced space and inventory must be in very small lots. छोटे lots आप रखें, बड़े बड़े lots ना बनाएं. Units are always moving because there is no storage. क्योंकि हमने inventory को क्या करना है, ख़त्म करना है. Then JIT की inventory कैसी होती है? Inventory is at the minimum level necessary to keep operations running. आपने inventory को ज़्यादा नहीं करना होता. And how to do it? You use a pull system. अभी आगे मैं बताता हूँ what is a pull system in the inventory. Then reduce the lot sizes, which we have been talking about in all the slides कि जी आपने lot size को क्या करना है, छोटा करना है. उसके बाद develop JIT delivery systems with suppliers कि जब भी आपको ज़रूरत हो suppliers उसके वक्त आपको दे. Deliver directly to the point of use. There are certain old organizations जो कि आता है गेट पे साइन होगा, फिर 4 दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा, फिर वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे जाएगा. So it actually reduces, it actually creates lots of wastage. So what JIT says कि जी आपकी जहाँ पे वो raw materials चाहिए वहीं पे सीधा वहाँ पे आप उसको drop करें, rather than making or rather moving them from one point to another, and which is adding into the wastage. उसके बाद perform to schedule whatever you are doing, just do it as per schedule. Reduce the setup time waste कि जी आपका जो setup time है, जो अब जिस time के साथ आपको preparation start होना है उसको क्या करें, कोशिश करें कि वो कम से कम हो. And always use a group technology. अब क्या होता है कि जब हम variability को reduce करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त आपकी पिक्चर बन गई. एंड व्हाट आर दे डूइंग इज कि इन्वेंट्री लेवल जैसे जैसे हाई है तो आपका जो ये 4-5 जो फैक्टर्स, स्क्रैप, सेटअप टाइम, लेट डिलीवरीज, क्वालिटी प्रॉब्लम्स, प्रोसेस डाउन टाइम, ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन इन्वेंट्री के ज़्यादा होने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो गई हैं, छुप गई हैं. दे आर हिडन एंड यू कांट सी देम कि जी मेरे प्रोसेस के अंदर ये वाले इश्यूज हैं. अब जैसे जैसे आप इन्वेंट्री को लो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी अपेयर होती जा रही है. एंड अल्टीमेटली वंस दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व और आपकी इन्वेंट्री मिनिमम लेवल पे है जहाँ पे आपके ऑपरेशन स्मूथ चल सकते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेरी स्मूथली. सो व्हाट वी से इज कि रिड्यूस इन्वेंट्री. अब रिड्यूस इन्वेंट्री इज बेसिकली रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, अनकवर द रॉक्स कि जो आपकी रॉक्स हैं, जो ये आपके बॉटलनेक्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, जो कि आपके ऑपरेशंस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, जो आपके वेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं. विद द रिडक्शन इन इन्वेंट्री दैट एक्चुअली इज मेकिंग द ऑपरेशंस स्मूथ. उसके बाद प्रॉब्लम्स आपके क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है. आपने ऑपरेशंस को राइट इन टाइम करना है, तेज़ी में करना है. आपने कस्टमर को वादा किया हुआ कि जी योर कंप्यूटर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन 2 days, तो आपके पास सारा मटीरियल होना चाहिए, आपका प्रोसेस फास्ट होना चाहिए. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू. देन ultimately there will be virtually no inventory and no problems. जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री होगी उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर आपकी इन्वेंट्री है ही नहीं तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. As Shingo says, inventory is evil. ठीक है, so let's not have inventory and follow JIT. अब एक और हमने बात की कि जी to start reducing the lot size. अब ये क्या है, एक wedge का है, तो हमने इसमें क्या किया होता है कि जी मिनिमम एक लेवल डिफाइन किया होता है और एक अपर लिमिट होती है. हम उसी के दरमियान रहते हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं जाते. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन एवरेज ऑर्डर साइज इज़ 200, अगर 200 उसका ऑर्डर साइज है तो एवरेज इन्वेंट्री इज़ 100. ठीक है, ये हमने लॉट साइज अपने डिफाइन कर ली हुई है. ठीक है, एंड दिस इज़ व्हेन द एवरेज साइज इज़ 100 तो आपका एवरेज इन्वेंट्री साइड का होता है 50, यानी 50% आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद
आइडियल जो आपका जो लॉट साइज होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन इज टू हैव लॉट साइजेस ऑफ 1 pulled from one process to the next. उसके बाद often it's not feasible and use EOQ analysis to calculate the desired setup time. EOQ आप पढ़ चुके हैं operations management में, so I'm not going into the detail. So दो changes आपके लिए necessary है when we are talking about the reducing the lot sizes. Number one, improve the material handling, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका material बेहतर तरीके से handle होगा उतना ज़्यादा आपकी performance better होगी, and reduce the setup time. और अगर setup time आपका ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा आपका operation time ज़्यादा होता जाएगा. So अपना setup time हमने कम करना है. Now what we talk about कि अपने setup costs कैसे कम करनी है. High setup costs encourage large lot sizes, क्योंकि जितना ज़्यादा आप setup time कर रहे हैं उतने ज़्यादा आपके lot sizes बढ़ते जाएंगे. And reducing the setup costs reduces the lot sizes and reduces the average inventory. Now setup time can be reduced through the preparation of prior to shutdown and changeover. अगर shutdown कर रहे हैं, changeover कर रहे हैं तो आप always उसकी prior preparation के साथ आप उसको reduce कर सकते हैं. Then अगर आपका ये है एक छोटी सी एग्जांपल है, स्टेप 1 के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेटअप इनटू ऑपरेशन एंड एक्चुअल सेटअप डूइंग एज मच पॉसिबल. ये आपको अगर करें तो ये आप यू कैन सेव 30 मिनट्स ओवर हियर. देन स्टेप 2 में मूव मटेरियल क्लोजर टू इम्प्रूव द मटेरियल. यहाँ पे आप अगेन 20 मिनट्स सेव करते हैं. अगर आप लास्ट एक्सट्रीम पे देखें 90, 60, 45, 25, 15, 15 लिखें और इस तरह आप अपने टाइम को क्या करते जाते हैं, सेव. इन स्टेप 1 यू सेव 30 मिनट्स, इन स्टेप 2 यू आर सेविंग 20 मिनट्स, इन स्टेप 3 यू आर सेविंग 15 मिनट्स. एंड यूज वन टच सिस्टम टू एलिमिनेट एडजस्टमेंट्स, यानी ज़्यादा ना का आपका वही ग्रुप टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये दिस इज़ एप्लीकेबल एंड यू सेव 10 मिनट्स. एंड लास्ट में आपका क्या आ जाता है, ट्रेनिंग ऑपरेटर स्टैंडर्डाइज अगर आपने प्रोसीजर्स को किया हुआ है. एंड रिपीट द साइकिल अंटिल द सब मिनट सेटअप इज अचीव्ड. और इन 6 स्टेप्स में आपने देखें कि आपने कितना टाइम आपने सेव कर लिया. ठीक है, अब आ जाता है शेड्यूल्स. अब जो लीन मैनेजमेंट के अंदर जो हम शेड्यूल्स हम बना रहे होते हैं तो it should be communicated inside and outside the organization. Your employees need to know about it and your suppliers need to have an idea about your scheduling. अब level schedules क्या होते हैं? Number 1 is your process frequent small batches, यानी batches में आप ले रहे होते हैं. Number 2 is freezing the schedule helps stability, यानी आपने अगर शेड्यूल एक रखा हुआ है तो वो क्या लेके आ जाता है, स्टेबिलिटी ले आता है. लेकिन अगर आप डेली शेड्यूल चेंज कर रहे हैं तो वो इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी. अब क्या हो जाता है, अब हम एक सिस्टम लेके आते हैं शेड्यूल्स के अंदर अपनी शेड्यूलिंग को बेहतर करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज योर कैनबान. कैनबान इज बेसिकली अ कार्ड सिस्टम और आप सिग्नल्स देते हो यूज्ड इन अ पोल सिस्टम. जब मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ कि जी अब मैंने आई हैव शोन द कार्ड एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग, जब तक मैं कार्ड नहीं शो करता तब तक आपकी प्रोसेस में वो चीज़ें मूव नहीं होती. हियर इज एन एग्जांपल दैट बेटर शेड्यूलिंग किस तरह आप कर सकते हैं JIT की टैक्टिक्स को लगा के कि always communicate your schedules to your suppliers. Your suppliers need to be in the circle. They need to be kept in the loop. They need to be updated and make level schedules. ठीक है, freeze part of the schedule, perform to schedule, seek one piece make and one piece move. कि जी जैसे हमने एक पीस बना लिया उसके बाद अगला वो मूव हो जाएगा. डोंट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी क्या होती जाएगी, क्यूइंग हो जाएगी, आपके ऊपर चीज़ें नहीं चल रही. उसके बाद एलिमिनेट वेस्ट, produce in small lots, use Kanbans and make each operation produce a perfect part. यानी हर ऑपरेशन अपने पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब लेवल शेड्यूल्स में क्या होता है, that the process frequent small batches rather than few large batches. कि जितना स्मॉल करेगा उतना ज़्यादा आपका कंट्रोलेबल है. यू कैन ईचली सी कि जी कितना आप डिविएट कर रहे हैं. लेकिन अगर लार्ज बैचेस हैं तो उसमें आपका वेस्ट भी ज़्यादा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है एंड इट कैन बी इल मैनेज्ड ऑल्सो. मेक एंड मूव स्मॉल लॉट्स सो दैट लेवल शेड्यूल इज इकोनॉमिकल. ठीक है, एंड देन जेली बीन शेड्यूलिंग आपने करनी है. And then freezing the schedule closest to the due dates can improve performance. ठीक है, अब आ जाता है Kanban.
Kanban क्या है? It is basically coming from Japan and it is the word for a card, and the card is an authorization for the next container of material to be produced. कि जी आपने signal दिया तब वो produce होगा, otherwise वो नहीं produce हो रहा. A sequence of Kanbans pulls material through the processes. ये आप सिंगापुर में देखेंगे, चाइना के अंदर आप देखेंगे, ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कैनबन, जापानीज फर्म्स बहुत ज़्यादा कैनबन का यूज़ करती हैं. Then many different sorts of signals are used, but this system is still called Kanban. यानी कार्ड is conventional, लेकिन अब लाइट्स के साथ भी हो गया है, so this is basically known as, still that is known as Kanban. अब अगर आप देखें, this is basically a card system. User remove a standard sized container, ठीक है, signal is seen by producing department as authorization to replenish. उसने मूव किया और आपको पता चल जाता है कि जी अब यहाँ से मूव हो गया है, now let's go for, यहाँ पे उसने सिग्नल दे दिया है, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखें, आपका जो फिनिश गुड्स हैं उसने सिग्नल दिया, देन कैनबन हुआ, उन्हें फाइनल असेंबली लाइन में किया, एंड देन इट मूव्स फ्रॉम वर्क प्लेस टू है. सो हर जगह सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है. आपने कार्ड दिखाया तो देन इट मूव्स टू फाइनल असेंबली, कार्ड दिखाया देन इट मूव्स टू फिनिश गुड्स, कार्ड दिखाया तो इट मूव्स फॉर द कस्टमर ऑर्डर. एंड इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, कैनबन इज वर्किंग सो दैट हर चीज़ मूवमेंट में रहे, कोई चीज़ आपकी रुकती नहीं है. एंड इफ़ यू सी द फाइनल असेंबली लाइन, इट्स, एक तो आप देखोगे यू शेप्ड है, वर्कर्स सारे अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं, उसके बाद दे आर, द डिस्टेंस इज वेरी लेस अमंग ईच अदर, एंड इट इज़ बेसिकली अ वर्क ग्रुप. अब जिट के अंदर आप क्वालिटी कैसे रखते हैं, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल, ठीक है. There's a very strong relationship between JIT and quality. JIT is basically वो lean management की मैं बात कर रहा हूँ. That JIT cuts the cost of obtaining good quality because JIT exposes poor quality. जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री लेवल कम होती जा रही है, जैस वो शॉन्ग ने कहा था कि जी इन्वेंट्री इज ईवल, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी इंश्योर्ड होती है. बिकॉज लीड टाइम्स आर शॉर्टर एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर एक्सपोज्ड सूनर. जितना ज़्यादा आप काम करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ डायनामिक, कोई चीज़ इन्वेंट्री में नहीं जा रही, सो इट एक्चुअली एक्सपोजेस द क्वालिटी इशूज इन द फर्स्ट इंस्टेंट. देन बेटर क्वालिटी मीन्स फ्यूअर बफर्स एंड अलाउज सिंपलर जिट सिस्टम टू बी यूज्ड. अब जिट की क्वालिटी को अगर आपने करना है तो किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं इन लीन मैनेजमेंट. नंबर वन, हमें SPCs यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल टूल्स आप यूज़ करें, अपने एम्प्लॉयज़ को आप एम्पावर करें. देन बिल्ड फेल सेफ पोकायोक टेक्निक्स या आप चेकलिस्ट यूज़ करें. उसके बाद एक्सपोज पुअर क्वालिटी विद स्मॉल लॉट जिट, ठीक है, ज़्यादा बड़ी लॉट्स में नहीं आपने करना. एंड ऑलवेज प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, डू नॉट वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो लीन ऑपरेशंस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम जिट in that it is externally focused on the customer. Then starts with understanding what the customer wants. JIT is part of lean, but lean में थोड़ी सी differences आती हैं कि वो externally होता है and it is more focused towards the customer. And optimize the entire processes from the customer's perspective. अब आप customer के perspective से उसको देख रहे हैं. Building a lean organization. अब how to build our lean organization? Over here what we are trying to do is कि we are doing a transitioning to a lean system can be very difficult क्योंकि आपका जो total behavior है वो change होना होता है. अब उसमें किसना है कि अगर हम lean management, lean strategy and lean operations में हम आ रहे हैं, so we have to take care of these 3 points. Number 1, use JIT techniques. जब आप JIT techniques use कर रहे हैं इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, lean operations कर रहे हैं. Then build systems that help employees produce perfect parts. It's not that just the employee is responsible. अगर employee की external environment ही इस तरीके की challenging नहीं है या उस तरीके से बेहतर नहीं है, so then it is unable to work upon. ठीक है, so आपने अपने employees को focus करना है और आपने अपने employees को इतना motivate करना है, इतना incentivize करना है, so that they can work in group, they can use a common technology and they would say कि they are producing perfect parts in every stage. और उसके बाद reduce space requirements. Space जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी efficiency increase होती है. Then you have to develop partnerships with your suppliers. You need to educate your suppliers कि आप किन quality standards पे काम कर रहे हैं, आपका क्या schedule है. उसके बाद eliminate all but value added activities.
जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, डिलीट देम फ्रॉम द सिस्टम, अदरवाइज keep on with the activities which are adding value. उसके बाद you have to encourage your employees, you have to develop your employees, you have to motivate your employees because they are part of this process, and you have to make the job challenging. Don't make it mundane, don't make it routine job, and always build a worker flexibility. ठीक है. अब लीन ऑपरेशंस एंड सर्विसेज. अब सर्विसेज के अंदर हम किस तरह लीन को यूज़ करते हैं? दैट्स बेसिकली द जिट टेक्निक्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर यूज्ड इन सर्विसेज. अब कौन सी यूज़ होती है? नंबर 1 सप्लायर्स में यूज़ करते हैं, लेआउट्स में यूज़ होती है, इन्वेंट्री में यूज़ होती है, और शेड्यूलिंग में यूज़ होती है. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब क्या होता है? एक है 5 स्कैन. अब ये 5S स्कैन क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक. अगर आप बिल्कुल ऊपर देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट. ठीक है. सॉर्ट क्या करता है? द फर्स्ट S इज़ योर सॉर्ट. और सॉर्ट में अभी जो मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था, दैट कीप ओनली व्हाट यू नीड. ठीक है. जो भी चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, डोंट ब्रिंग देम. ठीक है. लीन तभी आएगा. ठीक है. नंबर 2, आप उनको जब आपने सॉर्ट कर लिया, प्लेस एवरीथिंग इन ऑर्डर. तो नंबर 2S इज़ योर सेट इन ऑर्डर. पहला है सॉर्ट, नंबर 2 इज सेट इन ऑर्डर. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस. ठीक है. नंबर 3, once you have sorted out, once you have set it in order, then it's shine, cleaning and looking for ways to keep clean and organizing. अब अगर आप देखें, इतना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, they are working with so much material, but आपके floors, walls, stairs, equipment, surfaces, not lines, cleaning material not easily accessible, labels, sign brokerages and unclean, ये सारे issues हैं, इनको आपने remove करना है, because then you are actually having the third S. Number 4S, that you have to standardize. अब standardize में क्या करना है? Maintaining and monitoring the first 3 categories. उसको आपने maintain करना है और monitor करना है sort को, उसके बाद आपने set in order को, और उसके बाद shine को. ठीक है. एंड देन द लास्ट वन इज़ योर सस्टेन, कि इस चीज़ को आपने क्या करना है? सस्टेन रखना है. ठीक है. ये नहीं हो गया इट्स जस्ट अ वन टाइम थिंग एंड यू हैव जस्ट टू मैनेज इट. नो, इट हैज़ टू बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन कम्स योर सप्लायर नेटवर्क्स. जितनी भी हमने बात की विद रेफरेंस टू लीन, कि जी लीन को हम किस तरह ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ लिंक अप करते हैं, हाउ लीन मैनेजमेंट कैन बी सस्टेनेबल. तो अब उसके अंदर हमने क्या देखना है? दैट लीन needs to be an important ingredient in lean management is your supplier. आपका जो supplier network होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए और sustainable होना चाहिए. And what we are talking about in supplier network, that is basically long term supplier contracts होने चाहिए. आपकी production synchronized होनी चाहिए. उसके बाद supplier को आप certification दे दें. उसके बाद mixed loads and frequent deliveries होनी चाहिए. डिलीवरीज आपकी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए. उसके बाद आपने अपने सप्लायर को प्रिसाइज डिलीवरी शेड्यूल्स देने हैं. एंड देन ऑलवेज ट्राई टू लोकेट योर प्लेस इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द कस्टमर. अब once we have done that, all of it, so what is actually the benefit of this lean production? The benefit of this lean production is number 1, your reduced inventory. ठीक है. आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है. नंबर 2, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. एंड इट्स नॉट, डोंट थिंक दैट वी आर जस्ट टॉकिंग इन वर्ड्स कि भी ये काम हो गया. अगर आप वाकई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करेंगे या करते हैं या अप्लाई करते हैं, यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. It's basically an action-oriented work. It's basically not in just theory. Like Japanese firms को आप देख लें, European firms को देख लें, American firms को देख लें, and even some Pakistani firms. हमने एक research की थी when I asked about कि ये steel re-rolling mills में SPC tools, statistical process control tools आप लगा रहे हैं कि नहीं, and some were applying it and they were having some really good results, और कुछ नहीं यूज़ करते तो उनका issue आ रहा था. So आपने अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है. उसके बाद जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स उसको ट्राई टू कम करें. उसके बाद सेटअप लीड टाइम्स को कम करें और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें.
दैट लीड्स टू बेनिफिट्स इसके क्या आ जाते हैं कि जी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में। उसके बाद आपके रिलेशन सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप सस्टेनेबल हो जाते हैं, बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप होते हैं। देन यू आर यूजिंग अ सिंप्लीफाइड स्केजुलिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़, जो आपकी मॉनिटरिंग या एवेल्युएशन के जो टूल्स हैं वो आपके सिंपल होने चाहिए। उसके बाद आपकी कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स को आप बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड यू हैव मोर प्रोडक्ट वैरायटी दैट यू आर ऑफरिंग टू द कंज्यूमर। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, when we are applying lean in any organization, so it actually fine tunes your operating system. यार आपके operations को क्या कर देता है, they are actually they brush it, they make it better, they bring efficiency in the system. उसके बाद USA के अंदर जो leans हैं वो थोड़े से different है as compared to Japan. Japan is very particular about your lean management, and lean production is still an evolving concept, क्योंकि as I said, जिस तरह quality ने अपना charm as such भुला दिया है, तो lean is still being applied, and lean अभी भी it has a very major requirement in terms of improving the organizational capacity, in terms of improving the organizational productivity, in terms of improving the employees motivation level. And one thing याद रखें कि it's not कि जी आप हर कोई lean apply कर सकता है. It requires a lot of commitment, it requires a lot of effort, so lean production is for everyone. Now अब lean की जो services हैं, अब वही वाली बात के the reason why I talked about services in the last lecture, क्योंकि हमने सिर्फ lean को एक perspective ये ना देखा जाए that we are just talking about in terms of your production, we are also talking about in terms of your services, ठीक है। अब जो ज़्यादा prevalent applications है lean की रिटेलिंग के अंदर, आप लीन मैनेजमेंट बहुत काम कर रही है। अगर आप देखें यहाँ पे अल्फाते स्टोर है, उसके बाद आपका जो है there's another big store, I'm forgetting that name, but the big store chains retailing के अंदर they are using lean management. Then banking के अंदर आपके lean operations हैं, उसके बाद आपकी health care के अंदर, hospitals के अंदर ये you can use it very commonly, जो कि lean services को आप इस्तेमाल करते हैं। Now that actually sums up our work. So we are talking about this substitute strategy, and we covered quality, and today we have covered this lean management and amalgamated with your JITs. So after this lean, now we are going to talk about the BPRs, business process reengineering. That will be our next lecture. In the meantime, I would suggest that you have the book, kindly read the book, read the chapter, and then understand how this is a substitute strategy and what are the implications of that, and how we can improve our operations by applying lean in our organization. Till then, have a nice time, and I'll catch you in the next lecture. Allah Hafiz.